Characters of Ascomycetes. They are mainly terrestrial. Terra is ground. So terrestrial means opposite to water. They are mainly terrestrial. इनमें motile structure are absent in the life cycle of Ascomycetes. A very important part for competition. Motile structures absent in life cycle. They are mainly terrestrial. They are haploid fungi. They are septate, as told you earlier, uninucleate with a simple pore. Simple pore. The coloration, very important part for competition. Coloration. Coloration in Ascomycetes is due to conidiospore. Conidiospore. So conidiospore is the feature of Ascomycetes. Conidiospore. Conidiospore. ये देखिए, ये एक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं कोनिडियोफोर. फोर मैंने बताया था क्या होता है. फोर इज द स्टॉक एंड दीज आर द ब्रांचेस जिनको कहते हैं स्टेरिग्मा. On these sterigma, these exogenous spores are formed. These exogenous spores are known as conidiospore. Conidia या conidiospore. So we are doing the characters of Ascomycetes, mainly terrestrial, motile structure absent in life cycle, haploid, septate, uninucleate, simple pore, coloration in sac fungi due to conidiospore. The most distinctive feature of the group is formation of sac-like structure. Most distinctive feature, they have a sac-like structure, ascus. Ascus, in which 8 haploid spores are produced. In which 8 haploid एस्कोस्पोर. ये देखिए 2 टाइप के स्पोर मैंने बताया यहां आपको आर प्रोड्यूस्ड.
यहाँ देखिए मैंने दो टाइप के स्पोर बताए कि कोनिडियोस्पोर। कोनिडियोस्पोर क्या है? कोनिडियोस्पोर ये हैं एसेक्सुअल स्पोर, एसेक्सुअल स्पोर्स ऑफ सैक फंजाई। वेरेज जब हम दूसरी बात करते हैं, यहाँ ये का दो न्यूक्लियस आपस में इकट्ठे हुए तो डाई कैरियन बना N+N। उसके बाद ये दोनों फ्यूज कर गए तो 2N बन गया। 2N के बाद ये जो स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं एस्कस। इस एस्कस में मियोसिस होगी और ये 4 एस्कोस्पोर बनेंगे। फिर माइटोसिस हुई, मियोसिस में 1 के 4 बनते हैं, माइटोसिस में 1 के 2 बनते हैं। तो इसमें एस्कस में 4, अगर तो हमारे ये डिफरेंट टाइप के थे, सपोज ये तो ये 4 स्पोर अलग अलग टाइप के 8 एस्कोस्पोर बने। Once again, you should be clear about the concept of माइटोस्पोर एंड मियोस्पोर। तो हम कहेंगे कि जो एस्कोस्पोर हैं दे आर मियोस्पोर्स, दे आर प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेर एज कोनिडियोस्पोर ये फीचर एस्कोमाइसीट के फीचर हैं दोनों है। इसी के नाम पे इसका नाम एस्कोमाइसीट का एस्कोमाइसीट रखा गया बिकॉज ऑफ एस्कस। एस्कस क्या है? सैक। इस सैक में मियोसिस होगी, 4 स्पोर बनेंगे, फिर 4 के बाद 8 स्पोर बनेंगे। सो दिस इज द फीचर ऑफ एस्कोमाइसीट के। कोनिडियोस्पोर हैं। कोनिडियोस्पोर कौन से हैं? हैप्लॉइड स्पोर हैं जो हम पहले कर चुके हैं। और एस्कोस्पोर कौन से हैं? ये भी हैप्लॉइड हैं बट दे आर प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस। और कोनिडियोस्पोर आर प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस ओनली। सो नोट ऑन दिस।